Hello, students. So, students, today I have a concept of analysis of RC circuit in the boundary conditions. Boundary conditions means what? जैसे ही आपने switch on किया या फिर after long time when you are opening the switch. These are the boundary conditions. बिल्कुल end में और या फिर बिल्कुल what? Starting में. So you see here we have two circuits. In both the circuits, the capacity of the capacitor C is same. The EMF applied is same, but resistances are different, R1 and R2. And here I'm taking that, let's say R2 is greater than R1. All right, R2 is not greater than R1. And at t equals 0, we're keeping the key at the point A in both the circuits. At t equals 0, key is placed at A. So the moment key will be placed at A, charging of capacitor will start. Immediately after keeping the key at the point A, the charging of capacitor will start. Now see the equations for charging and discharging are what? Look at this. For the charging and discharging equations are, for the charging it is what? Q equals to Q naught 1 minus 18 power is T by RC. You must be remembering it. For the charging in the RC circuit, the equation is Q equals to Q naught 1 minus e to the power is T by RC. And here RC is called what? RC is denoted by tau. Its dimension will be equal to the dimension of time. Its dimension will be equal to the dimension of time. And this is called time constant of the circuit. Time constant of the circuit. So first you need to remember one point always, and that is what? RC, the time constant of the circuit, denotes the inertial character of the circuit. Already students, बच्चों denote क्या करता है? This denotes the inertial character of the circuit. So what is the meaning of inertial character here? It's about the electrical inertia. Electrical inertia what? जैसे ही कैप्सूल को आपने चार्जिंग के लिए किया, इस केस में the switch was kept in the position A, capsule will start getting charged in both the cases, and in both the cases it will take more time in charging and more time in discharging if the value of R into C is what? More. If the value of R into C is more, it will take more time for the capsule to get charged and more time for the capsule to get discharged. This is the meaning. So what is the maximum charge in both the cases? Maximum charge Q naught in both the cases. Charge will be equal to what? Both the cases means circuit 1 and circuit 2. Maximum charge will be Q equals to Q naught. Q naught will be equal to E into C. Because when capsule gets fully charged, there is no current in the circuit. So there will be no voltage across the resistance. So all the voltages will be across what? All the voltage will be only across the what? Capacitor. So the maximum charge in both the cases, in both the circuits across the capacitor will be what? E into C, which will be what? E. So you see here, in case circuit 1 and in circuit 2, the maximum charge, this will be achieved at the infinity. At time t equals what? Infinity. That will be what? Q naught in both the cases. But in the first case, charge will take relatively lesser time. And in the second case, charge will take what? More time. It will take what? More time. Similarly, in the discharging also you'll see, equation is Q equals to Q naught e to the power minus T by RC. So in the first case, because R into C is lesser, so discharge will take place fast. And in the second case, R into C product is more. So the time constant is more and it will take more time
for the capsule to fully discharge. Though the full charging, the complete charging and the complete discharging will always will take what? Infinite. So make it clear. It's a very important question, and that comes. Whether it's charging or it's discharging, they're giving you two circuits. In one case, the time constant is R1C. In the other case, the time constant is what? R2C. And R2C is bigger than the R1C. If they ask you in which case capsule will be charged by 50% or discharged by 50% sooner. So that will be what? The case in which R1 into C is lesser compared to R2 into C. जिस केस में R और C का प्रोडक्ट छोटा है, उस केस में टाइम कांस्टेंट R छोटा होगा, and in that case capsule will be charged earlier and capsule will be discharged also earlier. तो 50% हो, 70% हो, 90% हो, 99% हो, किस केस में जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होगा? जिस केस में R और C का प्रोडक्ट क्या छोटा है। और अगर वो लोग बोलेंगे किस केस में 100% चार्जिंग या 100% discharging जल्दी complete होगा, that will be what? Same in both the cases. Why? Because for the 100% charging or the 100% discharging, it will always take what? Infinite time. It will take what? Infinite time. So I hope you understood that. क्या R into C का प्रोडक्ट देखोगे और चार्जिंग या डिस्चार्जिंग में अगर R into C का प्रोडक्ट कम है तो जल्दी होगी, और R into C का प्रोडक्ट ज्यादा तो देर से होगी, ठीक है ना? कोई भी परसेंटेज ऑफ चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो up to 99.99%, but for the 100% it will take what? Same time, because that same time is what? Infinity. So that is why the answer is what? Same time. All right. Now look at this graph also. So ये तो दोनों आपको क्लियर हो गए कि मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे क्या था? मैक्सिमम चार्ज जो था that was Q naught in both the cases. तो हमने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया, ये मैं चलो हमने स्टार्ट, ये टाइम था, सॉरी, यहाँ पे क्या था? इट वाज टाइम, ये शॉर्ट टाइम, इज दैट क्लियर? मैक्सिमम चार्ज जो था इट वाज Q naught, दिस Q, है ना? यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज व्हाट वाज Q naught, दिस क्लियर? सो आप लोग जब चार्जिंग या डिस्चार्जिंग धीरे धीरे होगी तो इट विल टेक फॉर मोर टाइम। नाउ दिस वन, इस केस में वी आर टेकिंग द लॉग ऑफ इट, और लॉग ऑफ इट में वो लोग एक क्वेश्चन और पूछ देते हैं, दैट इज व्हाट? log q equals to ये ln q log natural है, equals to ln q naught minus t by rc into ln e. ln e will be what? 1. So now here graph has been plotted between log q and t. So look at this. ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, -1 by rc is the slope. So if rc is bigger, rc अगर बड़ा है तो ग्राफ का स्लोप क्या होगा? ग्राफ का स्लोप विल बी what? छोटा। सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग ग्राफ का स्लोप दोनों में नेगेटिव है ना? स्लोप मींस स्लोप का साइन, स्लोप दोनों में नेगेटिव है, -1 by rc। ठीक है, अब नाउ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किस केस में बड़ा होगा? जिस केस में rc इज स्मॉल, बिकॉज rc यहाँ डिनोमिनेटर में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किस केस में बड़ा होगा? जिस केस में rc छोटा है, दैट मींस व्हाट? इन द केस नंबर 1 magnitude of slope will be what? Bigger. And in the second case magnitude of slope will be what? Smaller. और जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करते हैं तो यू नो दैट कि अगर थीटा 0 डिग्री के क्लोजर है या थीटा 180 डिग्री के क्लोजर है, 0 डिग्री के क्लोजर है या 180 डिग्री के क्लोजर है, सो दैट स्लोप विल बी व्हाट? स्मॉलर स्लोप। इज दैट क्लियर? तो इस केस में दिस थीटा 1, दिस थीटा 2, सो व्हिच इज बिगर? इट्स मोर देन 90 डिग्री। तो अब जो जिस केस में थीटा 180 डिग्री के ज्यादा क्लोज होगा वो स्लोप क्या होगा? मैग्नीट्यूड में स्मॉलर। सो थीटा 2 यू सी फ्रॉम द ग्राफ इज ग्रेटर देन थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, क्लोजर टू द 180 डिग्री। आप देखो स्लोप ऐसे धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन का क्या होगा?
एंगल बड़ा होता रहेगा और स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। दिस इज क्लियर। आपको वो लोग कई बार ग्राफ का कंपैरिजन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 मैंने मार्क कर दिया। वो लोग आपको R1C, R2C ये सर्किट देंगे और आपसे पूछेंगे विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द विच सर्किट। आपको करना क्या है कि स्लोप दोनों में नेगेटिव, राइट। अब जिस केस में स्लोप का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, लेसर द स्लोप का मैग्नीट्यूड, वो एंगल क्या होगा, 180 डिग्री के ज्यादा क्लोजर। दिस पॉइंट इज क्लियर। सो फॉर R1C the R1C is smaller, so 1 upon R1C will be what, bigger. That means कि magnitude of slope will be what, bigger. आप साइन को अलग रखेंगे और मैग्नीट्यूड को सेपरेटली। Is that clear? So these are the questions based upon it. So all right students, I'm ending this session. So आप ठीक से watch करना, understand करना, इसलिए based repeatedly I have seen the questions are being asked.